Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope all you are doing good. Today we will create this silver eye makeup. First I'm using concealer and I'm using Swiss Beauty concealer in the shade 02. And for eyeshadow I will use Swiss Beauty eyeshadow palette. तो गाइज़ मैंने अभी कंसीलर यूज़ किया था स्विस ब्यूटी ब्रांड का, और आई शेडो पैलेट के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। और मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ अभी, पहले डार्क ब्राउन कलर, और अपनी पूरी लिड पर इसे अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन कलर एंड आई एम प्लेसिंग दिस ऑन ऑल ओवर ऑन माई लिड। So guys, how was your Christmas holiday? Do tell me in the comment box what all you did on your Christmas day and how you spent it. After this I will use burgundy, this maroon burgundy color, and I will apply this near my dark brown eyeshadow, and I'm using same brush for this. तो गाइज़ इसके बाद मैं अभी ये बरगंडी मैरून कलर अप्लाई कर रही हूँ अब डार्क ब्राउन कलर के बिल्कुल पास में, और मैं अपनी क्रीज लाइन तक ही अप्लाई कर रही हूँ इसे, और सेम ब्रश ही यूज़ किया इसके लिए मैंने। तो गाइज़ अब इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश। So guys, now I'm using medium blending brush here so that I will blend my eyeshadow. After this I will use black eyeshadow and I will place black eyeshadow in my outer corner, and for black eyeshadow I will use small blending brush. तो गाइज़ इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक आई शेडो, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और उसे अपने आउटर कॉर्नर आउटर वी में अप्लाई करूँगी बिकॉज़ हमारा ये स्मोकी आई लुक है। तो गाइज़ इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिक्विड ग्लिटर, जो कि मार्स ब्रांड से मैं यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज़ फॉर सिल्वर ग्लिटर आई एम यूजिंग मार्स लिक्विड ग्लिटर आई शेडो, and guys this is Indian brand. If you are in US or UK you can use other brands which is easily available for you. I will recommend Stila or MAC, and in drugstore you can go for NYX brand. They have really good glitters. So guys, I will apply this liquid glitter second time because this is party makeup, but let it dry before using second coat, because in my experience if you will apply second coat when the first coat is still wet, you will not get perfect shine. All you need to wait for just 1 minute so you can apply second coat smoothly. So guys मैं यहाँ second coat भी apply करूँगी, but सेकंड कोट अप्लाई करने से पहले आप 1 मिनट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा, क्योंकि आप अगर उसे जब तक वो सूखेगा नहीं पहला कोट जो हमने अप्लाई किया लिक्विड ग्लिटर का,
तो आपका जो है ना बीच बीच में से खाली खाली दिखाई देगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है जब मैंने पहले इसे यूज़ किया था फर्स्ट टाइम मार्स लिक्विड ग्लिटर को। तो मैंने गीले में ही जब ये गीला था फर्स्ट कोट, तो मैंने उस पर सेकेंड कोट अप्लाई कर दिया था और वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था तब मुझे। सो अब मैंने इसके बाद में काजल अप्लाई किया है फेसेस कैनेडा ब्रांड से। सो गाइज आई हैव यूज्ड फेसेस कैनेडा कोल and now I'm using smudging brush and I'm using black and brown which we used earlier and I'm applying this underneath my lower lash line. So guys अब हमने black और brown जो हमने पहले यूज़ किया था आई शेडो, उसे मैं smudging brush के साथ में अपने lower lash line पे अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। सो इसके लिए हमें क्लीन एक शार्प लुक मिल पाए। सो गाइज आई हैव यूज कंसीलर फॉर शार्प लाइन, but if you are using tape or eyeshadow guard, so you don't have to use concealer because you will get sharp line anyway. So now I'm using second coat with this brush. सो गाइज़ अब मैं सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड ग्लिटर का, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से ब्लैक आई शेडो यहाँ प्लेस कर रही हूँ, बट उसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड किया, ज़्यादा नहीं ब्लेंड किया। सो गाइज़ आई हैव यूज ब्लैक आई शेडो अगेन एंड आई जस्ट प्लेस्ड ब्लैक आई शेडो देयर in my outer V. I didn't blend my black eyeshadow. So now I'm using eyeliner from Faces Canada brand and guys अब मैं यूज़ कर रही हूँ Faces Canada brand का eyeliner। गाइज अब मैं एक पॉइंटेड आईलाइनर बना रही हूँ यहाँ। सो गाइज नाउ आई एम क्रिएटिंग पॉइंटेड आईलाइनर हेयर। इफ़ यू लाइक यू कैन क्रिएट, इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। तो गाइज अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ वही सेम ब्रांड का फेसेस कैनेडा and guys now I'm using mascara from same Faces Canada brand. I will give all my product link in my description box guys, so you can check. So guys मैं सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं उसी लिंक से। तो गाइज़ अब मैं आई लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ यहाँ। सो गाइज़ नाउ आई एम अप्लाइंग आई लैशेज़ एंड फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड ब्रांड। इन प्रेशियस पैलेट आई एम यूजिंग। सो गाइज़ मैंने प्रेशियस पैलेट से हाईलाइटर यूज़ किया है, ये वेट एंड वाइल्ड ब्रांड का है। मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज़ ये था आज का हमारा लुक और आशा है आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। So guys, this is the final result of my look and I hope you like my tutorial. Thank you so much for watching. Subscribe my YouTube channel and share this video as much as possible guys, and we will meet in our next video. Till then, bye bye, take care, you all, love you, bye.